MNS मीडिया न्यूज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों इसके तत्वाधान में साथ ही ग्रेटर मुंबई हाउसिंग रेसिडेंस फेडरेशन के श्याम सुंदर बुबना जी भी हमारे साथ सपोर्ट में जुड़े हुए हैं इसमें, तो उनका भी स्वागत है। मैं सबसे पहले सलील रमेश चंद्रा जी को इनवाइट करूं, एक्टिविस्ट हैं और इस विषय पर काफी अध्ययन किए हैं, काफी सरकार को प्रस्तुति दी है, प्रेजेंटेशन दिए हैं। तो सलील जी को बुलाने के पहले मैं इनवाइट करूंगा स्वागत के लिए प्रभु सर को, और आप सभी का स्वागत मैं बड़ी खूबसूरत लाइन के साथ में करता हूं। आप जो लोग हैं उन लोगों को, और ये जो कीनोट स्पीकर हमारे उनका भी मैं स्वागत करता हूं। कि जो कीनोट हमारे मेहनत करते हैं दोस्तों, उनके लिए क्लेप तो चाहिए, उनके लिए मोटिवेट लाइन भी चाहिए। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में इसलिए सफर जारी है। दोस्तों आज का सफर है कलेक्टर लेन पर जो हाउसिंग सोसाइटी है, वो सलील जी बड़ा अच्छे से पेश करेंगे। तो उनके लिए लाइन है मेरी कि इसलिए जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में इसलिए सफर जारी है। और बहुत सारा परिवर्तन हुआ, अभी हाल ही में कुछ महीने पहले मीटिंग हुई कैबिनेट की, तो उसकी अब अपडेट देंगे कि मुंबई में और महाराष्ट्र में कलेक्टर लैंड पर जो हाउसिंग सोसाइटी है, मैं बता दूं आपको 3000 हाउसिंग सोसाइटी सिर्फ मुंबई में जो कलेक्टर लैंड की बार बार हाउसिंग सोसाइटी को कुछ भी चीजें होती है सेल या रेंट पे, तो वो परमिशन की एनओसी की जरूरत पड़ती है। रीडेवलपमेंट का इशू होता तो बहुत सारी इमारतें गिर जाती है। राज्य भर में 22,000 हाउसिंग सोसाइटी है इसकी कलेक्टर लैंड पर। तो ये अहम विषय है जिसमें लाखों लोग, आप सभी लोग कनेक्ट हुए हैं, यूट्यूब पे देख रहे हो या जूम पे जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो मैं आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा हमारे हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी स्वागत करें सभी का। सलील जी मौजूद हैं, तमाम जो हमारे प्रकाश दरेकर जी हैं, श्री प्रसाद परब साहब हैं, एडवोकेट DS वडर साहब भी कनेक्ट हो रहे हैं। तो सभी का स्वागत है। और रमेश प्रभु जी महासेवा की तरफ से स्वागत करेंगे। प्लीज वेलकम प्रभु सर। गुड आफ्टरनून, मैं आप सबको स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है तो चेंजिंग लीज, जो अधिकार है जो हाउसिंग सोसाइटी को दिया हुआ है उसको ओनरशिप में कन्वर्ट करने के लिए जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लगभग एडिशनल 2 साल का मुदत देने की एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी की है। उसमें हमें सजेशन ऑब्जेक्शन देना है। वो नोटिफिकेशन क्या है, किस तरह से आप फ्री होल्ड राइट गवर्नमेंट लैंड का ले सकते हैं, इसके ऊपर आज के बहुत अच्छा जो स्पीकर है मिस्टर सलील रमेश चंद्रन, मैं उनको स्वागत करता हूं। वो हमारा जो फेडरेशन है ग्रांटी का, जो गवर्नमेंट लैंड का ग्रांटी का जो फेडरेशन है उसका अध्यक्ष है। मैं उनको स्वागत करता हूं और आप सबको स्वागत करता हूं। और आगे का कार्रवाई जो सुनील शर्मा जी आप कंटिन्यू करिए। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल प्रभु सर, धन्यवाद। दोस्तों ऐसे जो सब्जेक्ट होते हैं जनहित में, उनके लिए महासेवा हो या मुंबई हाउसिंग फेडरेशन हो या तमाम जो हाउसिंग फेडरेशन या मीडिया न्यूज सर्विस अग्रसर रहता है। तो आगे बढ़ते हुए ये जो ज्वलंत विषय है कलेक्टर लैंड पर जो हाउसिंग सोसाइटी है, जैसे मैंने बताया आपको 3000 हाउसिंग सोसाइटी सिर्फ मुंबई में और राज्य भर में 22,000 है। तो काफी सारी चीजें हैं दोस्तों कि जैसे स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इससे रिलेटेड है, और ऑक्यूपेंसी क्लास सेकंड लैंड फॉर फ्री होल्ड राज्य मंत्रिमंडल में क्या रूप था कुर्ला में एक बिल्डिंग गिरने के बाद, वो सब विषय पे तमाम पूरा उनका पीपीटी होगा हमारे सलील जी का। सलील रमेश चंद्रा जी, प्लीज वेलकम। सलील रमेश चंद्रा जी के बारे में बताते हैं, अच्छे जानकार हैं तमाम हाउसिंग सोसाइटी और लैंड से रिलेटेड, और कलेक्टर लैंड पर जो इश्यूज है ये काफी सालों से ये इस पर काम कर रहे हैं। तो इन्होंने सरकार को कैबिनेट को प्रेजेंटेशन भी रखा है और आगे इस पर फ्री होल्ड हो इस पे बहुत सारी चीजें भी तैयार की, और सरकार की तरफ से भी कुछ पॉजिटिव है, क्या कुछ है वो सब आपको बताएंगे। प्लीज वेलकम सलील जी, सलील रमेश चंद्रा जी, एक्टिविस्ट हैं। यस सलील जी। सलील जी का ऑडियो और वीडियो हाईलाइट करें, हमारे सहयोगी अविनाश शिंदे, अनम्यूट करें उन्हें।
कैन यू हियर मी? यस यस सर, परफेक्ट। यस, नमस्कार सर, सबको नमस्कार मेरा। और सुनील जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द लाइंस दैट यू हैव स्पोकन फॉर मी। सर आप जो काम हार्ड वर्क कर रहे हैं कलेक्टर लैंड पर, ऐसे जो आपने बताया कि 3000 हाउसिंग सोसाइटी मुंबई में और 22,000 हाउसिंग सोसाइटी पूरे महाराष्ट्र में, तो इसलिए मैंने एक खूबसूरत लाइन बोली आपके स्वागत के लिए, आपकी मेहनत के लिए, कि ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, लोगों का जिंदगी में परिवर्तन आए, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसलिए सलील जी का सफर जारी है, हम सब लोगों का सफर जारी है। जी सर, वेलकम। सर, आपने जो बात कही वो है एक हकीकत है, और हम लोग का 10-12 साल का एक तपस्या हो गया इसकी बेसिकली। और हमारा अचीवमेंट नहीं होता है तब तक ये हमारी जो संघर्ष है वो जारी रहेगी बेसिकली। क्योंकि आपने देखा नाइक नगर का क्या हुआ बेसिकली, और बाकी सब सोसाइटीज का भी वही हाल होना नहीं चाहिए। यही हमारा बेसिकली इच्छा है बेसिकली। मैं उस पे आता हूँ, नाइक नगर ट्रेजेडी पे आता हूँ, बट आपने जो लाइन की तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ रमेश प्रभु जी का, जिन्होंने ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है, और बाकी सब भी जो आए हैं। आई थैंक यू फॉर दिस कमिंग टू द प्रोग्राम। वी हैव मेड सेवरल, हम लोग ने काफी मतलब काफी नहीं, थोड़े बहुत किया है वेबिनार्स, बट जो भी वेबिनार्स किया है तो आई ट्राई टू मेक ए डिफरेंट प्रेजेंटेशन सो दैट एक नया कुछ एंगल उसको मिले और समझे। हर टाइम मैं सेम प्रेजेंटेशन नहीं देता हूँ, मेरे हर टाइम अभी आपने बताया तो मैंने एक नया प्रेजेंटेशन बनाया है ताकि एक नया पर्सपेक्टिव उसमें मिल जाए बेसिकली। परफेक्ट। और करंट सिचुएशन में क्या होता है, क्या इश्यूज है, उसका भी उसके बारे में एक उसका जिक्र होना जरूरी है बेसिकली। तो मैं अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे आता हूँ और फिर वहां से फिर मैं आपको धीरे धीरे बिल्कुल ओके सर, प्लीज प्रेजेंटेशन पीपीटी शेयर करें अविनाश शिंदे। यस सर, गो अहेड। या तो पहला स्लाइड है कि मेक गवर्नमेंट ग्रांटेड लैंड्स फ्री होल्ड। ये हमारी जो संघर्ष है वो मेन है। देयर इज अ डायर नीड टू मेक द लैंड्स ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट फ्री होल्ड, और उसकी जरूरत क्यों है वो आगे अपने को मैं बताते जाऊंगा। प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। हिस्ट्री ऑफ लैंड ग्रांट्स से अभी क्या होता है कि जो जमीनें दिए हैं शासन गवर्नमेंट ने, वो कितने साल से दे रहे हैं उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। मतलब जब से लैंड है, जब से गवर्नमेंट है, तब से लैंड ग्रांट्स हुए हैं। एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम द लैंड हैज बीन ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैज बीन गिवन टू द what you call the owner and all that. Our only advantage with the older grants is that the government doesn't have documentation, so they are as good as ownership lands or freehold lands basically. बट ये जो नए लैंड्स आते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंटेशन रहता है, तो द गवर्नमेंट ट्राइज टू कैच देम जैसे कि ये गवर्नमेंट लैंड है। नॉर्मली गवर्नमेंट ग्रांटेड लैंड्स को कलेक्टर लैंड बोलते हैं, क्योंकि जो एक्चुअल एग्रीमेंट होता है और या वो कलेक्टर के साथ में होता है। ग्रांट इज गिवन बाय द गवर्नमेंट एट द रेवेन्यू मिनिस्ट्री लेवल, but the actual signature of the agreement or dealing with the is done with the collector only. So it is many times called collector land basically, but basically they are government granted lands basically. Next please. Please go to the next. Mumbai city example. Now I'll give you an example of Mumbai city, how basically this what you call just to make you understand how these grants have come into existence, मतलब कैसे कैसे वो लैंड ग्रांट्स हुए हैं। तो मुंबई सिटी को पोर्तुगीज जब आए थे तो उन्होंने लैंड ग्रांट्स किए हुए हैं, और उसमें वो अभी भी उसकी जो नाम है
जैसे फजिंदारी टेन्योर या पेंशन एंड टैक्स टेन्योर, ऐसे अलग अलग नोटेशंस वो प्रॉपर्टी कार्ड में आते हैं बेसिकली, जिससे मालूम पड़ता है कि ये पोर्तुगीज ग्रांट है या ब्रिटिश ग्रांट्स है वगैरह। तो आप सोचो, जब भी पोर्तुगीज आए थे करीबन 400-500 साल पहले, तब से जो 7 सिटीज थे उनके ऊपर ग्रांट्स दिए गए। फिर बाद में वो जैसे जैसे हमारी सिटी, मुंबई सिटी बढ़ती गई, मतलब जो लैंडफिल किया गया, तो फिर वो टाइम में ब्रिटिश थे, तो करीबन 200-300 साल पहले के ब्रिटिश टेन्योर्स है, जिसको ओल्ड ब्रिटिश टेन्योर्स बोलते हैं बेसिकली। इसका डॉक्यूमेंटेशन का कोई ठिकाना नहीं है, ऐसा मेरे को मालूम है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन मतलब लैंड ग्रांट्स कैसे हुए, क्या है वगैरह, काफी कुछ, मतलब आई डोंट नो वेदर दे हैव एनी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और नॉट, बट देयर इज ए डॉक्यूमेंटेशन, late 1800s, मतलब 18, I have seen agreements of 1880, 1870, something like that. And then I have seen these tenures, British tenures, जिसको new British tenures बोलते हैं, till 1950 there have been agreements with the British government. मुंबई सिटी में एक चीज था जो मैंने इधर लिखा नहीं है, कि लेट 1800s वगैरह जो होने के बाद में there was somewhere in 1910 the Bombay city had called Bombay Improvement Trust, which is basically was headed by Jamshedji Tata for a long time. And उनका प्लानिंग का जो ये है, मतलब आप बोलेंगे ब्रिटिशर्स का है वगैरह, बट इट वाज बेसिकली मुंबई जो दिखती है, पर्टिकुलरली आप जो दादर से जो बड़े रास्ते दिखते हैं, जो 4 लेनिंग ऑफ रोड्स right up till almost I think Baikala, that has happened because of Jamshedji Tata. Then he had a plan for, you know, expanding the city. तो पहले आप देखेंगे ये सब क्या बोलते हैं वो, हिंदू कॉलोनी, फिर पारसी कॉलोनी, these are his what you call planning. You see, in Jamshedpur also later when he went, he had, you know, I don't know if you remember, in our school days we had a, you know, what you call that, his you know, what you call article where he said how cities have to be built and all that. तो बड़े रास्ते होने चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए वगैरह, तो वो सब अपने को इधर दिखता है. He had great plans for Dharavi, but unfortunately he shifted to Jamshedpur, and we lost a big what you call person. Otherwise the whole city would have city would have looked different. But you see what has happened after he left. Dharavi का क्या हालत हुआ है. Then after he left, Bombay Improvement Trust was merged with Bombay Municipal Corporation, and वो आप देखते हैं कि मुंबई का जो दुरावस्था हुआ है is basically because of improper planning. उसको जो होना चाहिए था, lack of planning, वो सब उसमें दिखता है. Almost all the lands in Mumbai city are given on lease basis. And जो tenures है, पोर्तुगीज जो ब्रिटिश, ये जो करीबन 15 different tenures है, उसका अलग अलग नाम है, nomenclature है basically. So this is about Mumbai city. I plan to give some, you know, interesting data information so that people are interested in what is happened in the history of this land, and people enjoy the what you call the lecture or whatever it is. Can we go to the next slide basically? यहाँ पे picture, hello सुनील जी अविनाश, वो फुल स्लाइड डालो ना. से साइड में मेरा पिक्चर आ रहा है, किसी और का आ रहा है, क्योंकि पीपल विल मिसरिप्रेजेंट मी फॉर समबडी एल्स. जरा वो देख लीजिए. हाँ, फुल स्लाइड डाल दो अविनाश. He will do it. Okay, but let the slide come. Otherwise, people will not. Yeah.
let us go to Mumbai suburbs. Yes, Mumbai suburbs. In 1950, Mumbai was expanded and new portions were acquired, which we call Mumbai suburbs. It became a policy of the government to grant lands to cooperative housing societies so that more accommodation can be created. मतलब वो जो लैंड ग्रांट्स से पहले तो उन्होंने डिसाइड किया कि अपना city will expand, and there was a policy. After this happened after the British left, and then the government wanted industrialization and all that, and they wanted the cities to expand so that there is wealth created and more jobs created and so on. So the lands were granted to the cooperative housing societies. More accommodation can be created, and these were called occupancy class 2 lands. Now occupancy class 2 land के जो डिटेल है, क्या exactly मतलब है, वो मैं बाद में आता हूँ. But temporarily understand that these lands were given as occupancy class 2. There are about 3,000 land grants in Mumbai city and suburbs, and 22 in whole of Maharashtra. 22,000 in whole of Maharashtra. इसमें ब्रेकअप ऐसा है कि करीबन 1200 लीज लैंड सिटी में है एंड करीबन 1600-1700 लैंड जो है वो सबर्ब्स में, दैट इज क्लास 2 लैंड्स है, ऑक्यूपेंसी क्लास 2 लैंड्स. कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So now, can you go to the next slide, please? Next. So we'll come to land tenures like occupancy class 1, class 2, and lease lands. So most of the earlier tenures are now classified into 3 categories as per law: occupancy class 1, class 2, and lease lands. Occupancy class 1 lands are freehold lands, and lease grants before 1900 were also freehold. Because I should specify that ये ऐसा नहीं कि occupancy class 1 ही freehold है. Lease lands granted prior to 1900 were also freehold. In fact, most of the lease grants only had to intimate the government कि मैं इसको बेच रहा हूँ. So I think they were almost even till 40s, 50s, that was the condition in most of the lands. So basically, what we understand as ownership is basically freehold lands, which means you can buy and sell without any intervention of the government. And that is, but when we call freehold lands, it means the holding is free. That is, आपको उसको sell करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है. But land is a state subject, and all lands are owned by the government. This is so. Even if you hold a freehold land, you are not the real owner of the land, because when we see that, let us say there is a mine. You've been given land, though it is a freehold. The mining rights, you can't do the mining, even though the land is with you. The government you have to procure the permission from the government, and you have to pay a certain what you call royalty to the government. So even if you remove any soil and if you are selling it, the government says that you are selling my property, and so you give me some money in regard to that. So we have to understand that there is nothing called full ownership kind of land. And then there is a concept of sovereignty that is in US and all that, where lands are almost owned, like a country. But in our case, there are a lot of, what you call legal or whatever, what you call differentiation that has happened. Freehold lands are basically lands which are basically freely held without any restriction to sell. So basically, though the government has given lands almost freehold, they do not consider the lands now as freehold. Though the terms of the grant, which means उसमें जो लिखा हुआ है, or most of them are prior to the independence, make it clear that they are freehold.
मतलब उसमें लिखने से आपका जो एग्रीमेंट है, जो क्लॉजेस है, उससे मालूम पड़ता है कि यू डोंट हैव टू टेक एनी परमिशन, और इट इज अ वेरी नॉमिनल परमिशन, यू टू जस्ट इंटीमेट द गवर्नमेंट. But now the government says they are not freehold, but they are basically government, what you call, intervention or government granted lands. So आपको पूरा freehold उसमें नहीं है. And there are restrictions. You have to come to us for permission. So any restriction on the land becomes occupancy class 2 land. Restrictions are basically starting with आपको परमिशन लेना है गवर्नमेंट से, ये सेल कर, परचेज सेल जो भी करना है, तभी आपको गवर्नमेंट से उसका अप्रूवल लेना है. आई होप माय वॉइस इज क्लियर, सुनील. एवरीबॉडी इज एबल टू लिसन. कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? Yeah. Go ahead. Okay, so can you go to the next slide? So occupancy class 2 land, this is a very important subject, and I don't know, I referred to any of the PowerPoint presentations in this about this. अभी ऐसा था कि 1902 to 1904, around that time, करीबन 3-4 साल there was a big famine in Bombay Presidency. Bombay Presidency मतलब गुजरात और मुंबई, आज जो महाराष्ट्र का certain portion वगैरह. And the farmers, उनको वो जो land revenue, मतलब जो agricultural tax लगता था गवर्नमेंट से, वो दे नहीं सका. Now agricultural tax was basically a huge source of income for the Britishers. Basically जो जमींदारी जो चलती थी, मतलब जो इनकम आता था, क्योंकि इंडस्ट्री कुछ नहीं थी, बेसिकली इट वाज एग्रीकल्चर. सो बेसिकली लैंड रेवेन्यू वुड मीन दैट यू टैक्स द होल्डर ऑफ द लैंड, एंड दैट इज वेयर इट इज. नाउ व्हेन द famines happened, the farmers were not able to pay the land revenue tax. जो आप any tax बोलते हो, that is also a land revenue tax. So there is a provision in the law which says that if you don't pay the tax, land revenue, the government can confiscate the land. They can take back the land because the land is owned by the government. So अभी क्या होता था कि गवर्नमेंट को लैंड लेके क्या करने का, दे आर, वो तो खेती करने वाला है नहीं, तो फिर क्या करने का. तो दे वेर गिविंग द लैंड बैक टू द फार्मर्स अगेन ऑन लीज बेसिस. अभी लीज में जो पैसा देना पड़ता है वो तो लैंड रेवेन्यू से और भी ज्यादा देना पड़ता है. तो इट बिकेम ए बिगर बर्डन. तो फार्मर्स क्या सोचते थे, अभी तो मेरा तो ओनरशिप तो गया, फ्री होल्ड तो गया, अभी ये लीज आ गया. अभी these leases were also freehold leases. So what the farmers were doing, they sold the lands so that एक बार अपना कुछ तो इनकम आ जाए. इतना डिफिकल्टी आती है, सब प्रॉब्लम्स है, they cannot pay the leases, and अपना famine भी है. So the purpose was defeated. The government wanted somehow to these lands to be in the name of the people, and they to pay some lease or land revenue and lease rental or land revenue and all that. So then they came out with a new tenure called occupancy class 2 lands, which meant that when they gave the lands back, re-granted them to the farmers, they cannot sell the land without the permission of the government. तो अभी उसको पकड़ के ऐसा लैंड दे दिया, पहले फ्री होल्ड लैंड था, और फिर वो एनी टैक्स नहीं दे सका, नॉट एनी टैक्स, लैंड रेवेन्यू टैक्स he could not give, and then he was converted to a land tenure which was basically very restrictive. Now आप समझ सकते हो कि what kind of mentality the government was having, कि आज एक आदमी जो परेशान है उसको आपको उसका फ्री होल्ड निकाल के क्लास 2 लैंड्स बनाए. इंस्टेड व्हाई डिडंट दे नॉट रिमूव द लैंड. चलो आज तुम नहीं दे सकते हो, ठीक है, दिस ईयर वी विल waive off the penalty and all that. But when the government is this kind of what you call oppressive government, such kind of thinking was not there basically. I'll come to the next portion. So आप देखेंगे occupancy class 2 has a dark history,
and basically it is this restrictive conditions that are there which makes it very regressive kind of a land tenure. मतलब एक बार आदमी अटक गया, उसकी मुंडी उसमें गवर्नमेंट के हाथ में है, तो वो तो जैसे जैसे चाहिए वैसे घुमाते जाता है बेसिकली. And how they did it, I'll come forward, because it is not the Britishers that only oppress the landholder. Even this also, the post-British independent government also did not behave much better. Can we go to the next slide, please? Next, please. Oh, sorry, lease lands. Sorry. Now there is this lease lands that are in existence. The Britishers and the Portuguese introduced this concept of lease lands, because अपने इधर वो lease land ऐसा कुछ concept था ही नहीं. So everything was basically occupancy kind of land, and मतलब what we had was multiple levels of ownership. So ultimately the last person 3-4 लेवल के ओनरशिप होते थे, एंड वो सब मतलब जमींदारी सिस्टम थी. तो ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस देयर ओन काइंड ऑफ जमींदारी सिस्टम. नाउ थियोरेटिकली the lease lands that I have described earlier, Mumbai city and Mumbai is not suburbs. There are some lease lands in Mahabaleshwar, Mathiran and Pune. Technically, they are, though they are supposed to be lease lands, Section 29(3) makes it clear that these are at par with the class 2, occupancy class 2 lands. And the problem is that जो law बनाते हैं, particularly the bureaucrats and even the lawmakers, I don't think the law is actually made by any parliament or what you call the lawmakers, but it is basically the bureaucrats who make the law. They are totally unaware of this. मतलब बहुत बार मैं अपने जो दोस्त लोग हैं उनको जाके बताता हूँ कि ये जाके दिखाओ, तो when they see that they get shocked basically. Now what does it say? 29(3) says that if you are holding land in perpetuity or for a period not less than 50 years with the option to renew on fixed rent, then they are as good as if they are occupancy class 2. मतलब उनका जो rights, liabilities and responsibilities of occupancy class 2 shall apply to them as if they are occupancy class 2 under this code. So technically or legally we can say there is no differentiation between lease lands and occupancy lands. But the whole of the revenue department or the bureaucracy or the collectors or the even the revenue ministers they are not knowing this clause. Now why is this clause introduced? Because when the law was made in 1966, the government took a very broad view कि जो lands grant किए हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं, we are not able to take it back. यहाँ पे तो लोग रह रहे हैं, अभी तो उनका तो as good as ownership हो गया है, आपको उनको निकाल नहीं सकते. और आपको land भी ले लिया तो वो building जो खड़ी है उसके ऊपर जो occupants है, उनको तो हम निकाल नहीं सकते हैं. लीज होगा तो लीज का मतलब ये नहीं कि लीज में अपने को वो लीज खत्म हो गया, जैसा हम रेंटल में किसी को 12 महीने में देते हैं और वो खत्म हो गया तो फिर वो खत्म हो गया उसका, अभी उसको निकालना है. So this is not the case in lease lands. They are lease grants, which is a different situation. These are granted under a grant act. तो वो जो grant act के अंदर जो leases दिया हुआ है, you cannot remove those people. And so basically they took a broader view of the situation and they said that these are as good as occupants class 2, the status of occupants class 2. So can we go to the next slide, please? Now there are other types of grants that are there. That is PWR. Can we unmute some? Hello. ऐसा भी है.
ये हेलो, पुदीना वाला चाय क्या बोल रहे हो? some मैंने disturbance is there. पुदीना लेके आया था। वो चाय में कौन पुदीना डालता है? नहीं डालता है कोई। Sir, please जरा आप बात मत करिए, request. Sir, in this PWR 219 grants, basically the lands are given to SC, ST, NT category, wherein there is a 90% reservation on the flats that are to be built in these lands, on these lands. So it has to be approved by the government. The government verifies everything, and then after that the grant is made. Then there are grants made to CHS, the Cooperative Housing Societies. Prior to 1970, when the land rates were very low, they have been given under at market rate because the land rates were very low. 2 rupees, 4 rupees, 5 rupees. That is the kind of land rate that was there. Because land was not a very costly thing prior to say 65 or so. And most of the lands which are there in the suburbs were basically swamps. मतलब उसमें कुछ ऐसा कुछ flat land ऐसा था ही नहीं. Then the same thing has happened with Nariman Point, Cooperative, where they were given lands in the sea. मतलब वो सब ऐसा sea में marking करके दिया हुआ था. And nowhere the infrastructure was developed by the government. Now post the 1970, when the land rate, मतलब land rates were started shooting up. मतलब 3-4 साल में 2 रुपए का 10 रुपया हुआ, फिर 50 रुपया हुआ, फिर 100 रुपया हुआ. Within, then the government said if the societies were given lands at these rates, they will not be able to pay this money. So then they said कि of course the acquisition price was 2 rupees and 5 rupees. But आप जब ये बेच रहे हो, so when you see the compare the market rates, then if you give it at those rates, it was not possible. So they said कि we'll give it at concessional rates. तो थोड़ा सा 50 रुपया 100 रुपया ऐसा करके चालू किया वो लोग ने बेचना. So that was called a concessional rate because as compared to the market rates, they were lower. They were lower, and they were given to middle class and economically weaker sections of the society, financial weaker sections, so that they can afford housing basically. Now, prior to 1950, the lands were given to individuals. Most of the lands were given to individuals. Very few lands have been given to cooperative societies. And now there is a, that individual sold it to a builder, and then the builder built a building, and because of the MoFA Act, he has to, he has to create a cooperative housing society and give the lands to the cooperative societies. So the land grants are given to individuals, but now there are cooperative societies standing on those lands. Many times the property card is still in the old name, and there are a lot of problems with these kind of lands because then they are lease lands and the government wants higher lease. That I'll come to later. Please go to the next slide. I'll come to some of the GRs that have been issued and how they have affected us. The number of GRs that I can refer to is huge, but this 1957 GR was a very big, important policy decision that happened in because of this GR. It is dated 21/11/1957, and there are two premiums that it introduced. One is to make the land freehold. मतलब first time नहीं, उसके पहले भी मैंने सुना है कि there were GRs and all that to make land freehold. And then the second was to charge a premium for transfer of land. Now all this must have happened earlier also, but this was the first one which we normally, this is still what you can say applicable or to some extent and all that. For freehold, the premium was 50% of the unearned income. Now, what is the unearned income? In today's language, you can understand what is capital gain. मतलब आपने एक प्राइस में लिया say 100 rupees में और आपने 500 रुपए में बेचा, तो 400 rupees is your capital gain. But वो टाइम में उसको unearned income बोलते थे कि आपसे बैठ के पैसा मिला आपको,
तो आपने कुछ अर्निंग किया नहीं है, तो उसके लिए अनअर्न इनकम करके बताए। मतलब वो एटीट्यूड ही ऐसा था कि आपने कुछ तो गलत कमाया है इसमें, नॉट रियलाइजिंग दैट द वैल्यूएशन ऑफ लैंड हैज गॉन अप। अगर वो घर भी है तो दूसरी जगह में जाएंगे तो उसको तो कुछ उसमें कम में तो मिलने वाला है नहीं, मतलब रेट्स ऑल ओवर हैव गॉन अप। नाउ उसमें ऐसा था, देयर आर टू टाइप्स बेसिकली, कि आप अगर परमिशन ले तो आपको 50% नहीं, हाँ यहाँ पे देन द सेकंड केस इज बेसिकली फॉर ट्रांसफर ऑफ लैंड, कि आप अगर ट्रांसफर ऑफ लैंड किसी को बेच रहे हो तो नहीं सॉरी एक थोड़ा सा गड़बड़ है। फॉर फ्री होल्ड ऑफ लैंड यू हैव टू पे 50%, मतलब जो भी रेडी रेकनर रेट, मतलब मेरा थोड़ा सा उसमें एरर है जो मैंने स्क्रीन में डाला है, तो आई विल रिपीट अगेन। फॉर फ्री होल्ड ऑफ लैंड यू हैव टू पे 50% ऑफ द रेडी रेकनर रेट, जो मार्केट रेट है उसका 50% आपको देना है। और दूसरा जो था ट्रांसफर ऑफ सेल का, उसमें अगर 100 रुपीज में लिया है और आप 500 रुपए में बेच रहे हो तो 400 रुपीज इज योर कैपिटल गेन, तो उसका 50% आपको एक प्रीमियम के हिसाब से देना है बेसिकली। बट ये किसको लगेगा, जो आप जाके प्रायर अप्रूवल लेना है, ये मैं बेच रहा हूँ ये टर्म्स पे, तो उसको 50%। बट अगर आपने परमिशन बिना परमिशन का बेच के आप चले गए और जो नया ओनर आता है उसको बाद में मालूम पड़ता है कि मेरे को अपने नाम पे करना है, तो देन आई हैव टू पे 75%, दैट इज 50% प्लस 25% एज एडिशनल पेनल्टी। तो आप देखेंगे दिस इज अ वेरी रिग्रेसिव टैक्सेशन, मतलब ये इतना सब टैक्स कोई 50% ट्रांसफर का भरने को कोई जाने वाला था ही नहीं बेसिकली। एंड व्हाट इज यूज्ड टू हैपन इज, आपका फ्री होल्ड का परसेंटेज इज एज गुड एज 50%, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होगा बिटवीन द व्हाट यू कॉल अनअर्न्ड इनकम एंड, बट द गवर्नमेंट वाज नॉट अलाउइंग टू मेक द लैंड्स। मतलब कोई बहुत जन ऐसे थे कि जिन्होंने परमिशन मांगा और नहीं मिला, थोड़े बहुत हुए होंगे, बट बिकॉज ऑफ दिस रिग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है कि आप एप्लीकेशन करते हो तो गवर्नमेंट के पास कभी कभी बहुत टाइम जाता है, एंड यू आर नॉट विलिंग टू डू दैट एक्स्ट्रा थिंग टू गेट इट नो, देन वो अप्रूवल के लिए फिर वो पब्लिक क्या करती है कि सीधा बेच देती है और निकल जाते हैं, तो मल्टीपल ये सब हो जाता है। तो रिग्रेसिव टैक्सेशन का ये तकलीफ होता है कि व्हेन इट इज नॉट properly calibrated, then people end up doing illegal things. आपका हमारा जो ब्लैक मनी का जो ये था, it has happened particularly 70s and 80s because we had 90% taxation and all that. So then people were, वो जब से आदत गिरी है लोगों को, तो तब से वैसा ही आदत हुई है बेसिकली। So these are the problems that are there. Then we come, but this is, if you can see, this is a very regressive kind of GR that I can say. Yeah, 50% for freehold and 75% for sale premium and all that. एक एग्जांपल मैं देता हूँ इस पे, कि मान लो आपने एक 10 लाख का प्रॉपर्टी लिया है और उसका 20 लाख में आपने बेचा है, तो आपका कितना रह गया, तो आपको कैपिटल गेन हो गया 10 लाख। तो आपने उसमें से 50% मतलब 5 लाख गवर्नमेंट को दे दिया। अभी 20 लाख पे आपको 5 to 6% ये लगेगा, स्टैम्प ड्यूटी लगेगा। सर सलील जी आप म्यूट में हो। जी आप म्यूट मोड में चले गए हैं, प्लीज
आपका ऑडियो ऑडियो नहीं आ रहा है, अनम्यूट करिए। अविनाश, अविनाश उनको अनम्यूट करो आप। Hear me? Can you hear me? Yeah, good. Yeah, please go to the next. Yes sir, go ahead. Next slide, please. ये तो क्लियर हुआ ना, controversial 1957 year. Yes sir, you can go ahead with the next slide. अविनाश जरा ध्यान दे वो ना, नेक्स्ट स्लाइड में ले लो। नेक्स्ट स्लाइड, राइट में फोकस। या नहीं 12 ऊपर, हाँ 12 का ईयर 2012, ये नंबर भी ऐसा है 12 नाउ दिस ईयर वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर लीज रेंटल। मतलब क्या हुआ था कि सालों से, मतलब ऑलमोस्ट 125 इयर्स का एक पीरियड था जिसमें काफी सारे लीज के जो रिन्यूअल्स थे, that did not happen. So the government brought a GR which wanted to renew the leases. But उसमें क्या किया कि जो लीज रेंटल उन्होंने लगाया था वो काफी हाई था, तो फिर many of the people who had already defeated increase in the lease premium, they went again to the court and it is now under challenge for the increase in the premium. So there are 2-3 things that I want to bring. One is the GR allowed conversion of class 2 lands at 20% of the RR. Matlab, now this is against the clause 29(3)(c) which already makes it a class 2 land. So सलील जी आपका ऑडियो प्रॉपर नहीं आ रहा, ब्रेक हो रहा है। सलील जी आपका ऑडियो ना प्रॉपर ब्रेक हो रहा है, आवाज नहीं आ रहा। थोड़ा माइक आपके माउथ पे लगाइए, मुंह पे लगाइए, आवाज माइक एयरफोन आपका, ताकि आपको हम लोगों को प्रॉपर आपका ऑडियो आवाज। यस अभी भी थोड़ा कम है सर, वॉल्यूम कम है, आवाज बहुत कम है, आवाज कम है। यस सर, क्या करूं? अभी आ रहा है क्या? अभी भी लो है आवाज, थोड़ा आवाज बढ़ाइए ना सर। ऑडियो माइक आप एकदम, वॉइस बहुत लो है। यहाँ पे पार्टिसिपेट का भी फीडबैक आ रहा है। अभी वीडियो आ रहा है आपका? अभी आ रहा है क्या? हाँ अभी आ रहा है? आप माइक अपने मुंह के पास लगाएंगे तो ऑडियो अच्छा आएगा। नहीं मैंने एकदम नजदीक में रखा है, एकदम नजदीक। पहले अच्छा आ रहा था, अभी बहुत लो आ रहा, कम आ रहा, आवाज आ रहा लेकिन कम आ रहा। मैं चेंज करूं क्या मेरा जो? बहुत लो आवाज आ रहा था, आवाज एकदम, ऑडियो बहुत लो है आपका। प्लीज चेक करें आप फ्रेंड्स। ऑडियो बहुत कम है, इसलिए थोड़ा रुकावट के लिए खेद है, लेकिन थोड़ी ही देर में ये ठीक हो जाएगा। अभी आ रहा है क्या? हाँ अभी आ रहा आवाज लेकिन बहुत कम है। रिकॉर्डिंग ऑन है, लाइव भी है यूट्यूब पे, नो इशू। यस सर, बोलिए ना सर, सलील जी। हेलो। यस हेलो, कैन यू हियर मी? यस सर, अभी ऑडियो अच्छा है, गो अहेड। ओके, तो विल कम टू दिस GR। उसका 12 का GR है। इट वाज बेसिकली फॉर रिन्यूअल ऑफ लीजेस एंड आल्सो इट इंक्रीज द लीज रेंट फ्रॉम say almost 3,000 to almost 10 lakhs, 15 lakhs and all that per annum. So people went into the courts and now it is under dispute. But दो चीजें मेरे को इसमें बताना है। एक मतलब जो लीज, I'll go to the last point first, कि उसमें लीजेस को क्लास 2 में कन्वर्ट करने का था at 20% of the RR.
Now this goes against the section 29(3)(c), which I had referred earlier, कि leases which are given for 50 years and which has a clause for renewal are already classified as class 2 lands. And ये जो GR के हिसाब से अपने शाहरुख खान ने अपना लैंड ऑक्यूपेंसी क्लास 2 में किया, कोई सिटी में भी किया, ऐसा भी मैंने सुना है। दूसरा ये बात था कि इसने ये GR में क्लास ऐसा ये था कि if say there was a Gujarat government and Gujarat High Court and a Supreme Court judgment, we said that the right of a government in a leased land was 25%, and the balance was 75% was with the landholder. Now, when it said that this is the case, so how would 50% जो GR 1957 का कहता है कि 50% प्रीमियम ले लो, तो कैसा हो सकता है? तो it is said कि जो 25% गवर्नमेंट का जो राइट है, उसमें 50%, मतलब 12.5% is what is the government can charge as capital gain. But ये सब on theory हो गया. I have seen cases where, and particularly a political leader in Bandra, उसको actual 50%, मतलब जो net capital gain था, उसके ऊपर 50% उन्होंने लगाया. तो this kind of things are happening. मतलब गवर्नमेंट को ही खुद को मालूम नहीं पड़ता है कि what are the laws and rules and regulations that they have issued. Particularly bureaucracy को जो है, उनको मालूम नहीं पड़ती कि these are the things that have happened. So there is always a wide interpretation of the, wrong interpretation, you can say, of the rules and regulations. Can we go to the next slide, please? My voice is audible? Yes, correct, proper, sir. Okay. Avinash, next slide. Okay. So now we'll go to the Freehold GRs and Gazette notifications. Now we have been campaigning for the Freehold for a long time, almost since 2011, 12 and all that, because of the problems that we faced for redevelopment. First we went for redevelopment. Then we understand that it is not possible unless the government brings out a proper policy where lands are first made freehold, and then we can go for redevelopment. So after a long follow-up with the government, the various GRs issued in the year 18, 19. Now I'm referring to 2, 3. There are some more also. The GR for refugees. Refugees मतलब partition से जो लोग आए थे, उनको freehold land में convert करने के लिए without any premium के लिए government issued a GR dated 14/6/2018. उसको वो compensation pool account से land दिया गया और फिर उनको उसको जब दिया गया तो महाराष्ट्र में class 2 में डाल दिया उसको, because the policy was to make everything class 2 only. So, but then they अभी जब खर्चे थे बोले नहीं 50% में करेंगे. Ultimately, they put pressure on the government, and without any premium, they were allowed to convert to freehold. So we had protested at that time कि आप freehold कर रहे तो हमको भी free में दे दीजिए, but वो कुछ हुआ नहीं. फिर the नाजुल लैंड्स का GR निकला 2003-2019, जस्ट अपना जो मेन GR निकला उसके पहले. Now this is a GR, not a gazetted notification, and वो 5% for residential and 10% for commercial, and without any restriction of time. मतलब आप 10 साल के बाद में भी 5% और 10% में convert कर सकते हो. Now GR is issued very in a simple form. कि government एक decision, cabinet decision ले लेती है, and उसका notification आ जाता है. But gazetted notification जो होता है उसमें बहुत प्रोसेस रहता है कि आप उसको पब्लिश करते हो, then you मतलब उसको पहले कैबिनेट से अप्रूवल लेते हो, फिर वो वापस पब्लिश करते हो, you take suggestion and objection, then it goes to the cabinet again. ऐसा सब बहुत कुछ उसको डिफिकल्टी में से हमको जाना पड़ा. फिर वो मतलब वो हम लोग को सजेशन, वो टाइम में जब सजेशन ऑब्जेक्शन थे
we gave about 2,000, 3,000 letters to the government saying that आप कम करो करके. So 8/3/2019, this is a date just prior, मतलब 9/3/2019 को elections to the Lok Sabha was announced. It was a Sunday, and 8/3/2019 was a Saturday. So just a day before the elections were to be announced, the government came out with this Gazette notification where almost most societies will be paying 15% and individuals will be paying 25% of the ready reckoner rate. Now उसमें और एक condition ऐसा डाला कि ये 3 साल के लिए है और बाद में 3 साल के बाद में 60% and 75% बनेगा. तो वो 3 साल तो खत्म हो गया अभी और now it is 70 and 60 and 75%. Now let us go to the causes for why few conversions have happened. मतलब उसके बाद में तो conversions होना चाहिए. Say when the rule was being made, we met the revenue secretary. We said कि ये जो आप रेट लगा रहे हो, ये सिर्फ रिच लोगों के लिए है, ये आम आदमी के लिए है ही नहीं. ये आम आदमी के लिए लाने के लिए आपको बहुत कम करना पड़ेगा. These people will not, most societies will not be able to pay. Oh, well, let us see how it rolls out and all that. So, and actually in reality, it so happened that very few conversions took place. We did a RTI for Mumbai city about 6 months back. We of course did a RTI for Mumbai suburbs also, but I find that they don't respond very well. But जो भी RTI आता है, उससे आपने को एक idea आती है. So out of the 1,200 odd leases in Mumbai city, the freehold, 19 lands were converted to freehold, and only one was a cooperative society, cooperative housing society. The premiums now उसके लिए ये बात है कि premiums are high, percentages are high. The RR rate in Mumbai is the steepest, so this is one reason. The second reason is that the government considers violations, that is membership transfers, as violations, and to get these violations cleared is time consuming and many times it is very difficult. तो ये जो violations का जो चक्कर है जो गवर्नमेंट ने चलाया है, जिसकी वजह से वो धक्के खा रहे हैं सोसाइटीज होगा, इसके वजह से फ्रीहोल्ड बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है. Then of course there was a COVID epidemic, which also the reason government came to a standstill and all that. उसके लिए भी conversions का ये कम हुआ. Can you go to the next slide, please? Violations. Next slide. Next slide, please. Avinash, next slide. Yes. Violations. Now, there are various violations that the government considers, such as non-approval of membership transfer, not completing the construction in 3 years. Many times, बहुत ऐसा जगह होता है कि it is given to residential and they have converted the ground floor to commercial. कभी-कभी बहुत top floor में वो लोग advertisement लगाते हैं, या फिर वो mobile tower आते हैं. तो ये mobile tower और ये सब जो है उसका permission लेना पड़ता है. कमर्शियल किया तो भी आपको गवर्नमेंट से कुछ अप्रूवल लगता है. तो these are the various violations, but most societies these violations are not there. Let us say 95% societies में ये कमर्शियल और होर्डिंग का नहीं है. ज्यादा 100% of the societies face this problem of approval of transfers. So this is one of the violation. Then the second is this. The whole, there are various GRs issued, and there is a lot of paperwork, and there are multiple GRs. तो उसके में ये जो paperwork और follow-up में तो it's very difficult to get the. Now, for example, I'll give a paperwork. Like for example, if a husband has died, who is the main owner, who acquired the house and all that. After that, the nomination goes to the widow, and she has never worked. She is a housewife. Government says कि नहीं, आप उसका salary certificate या income proof लेके आ जाओ. अभी she cannot get that kind of document.
now we have made a representation to the collector कि ये document की जरूरत क्या है. There is a certain GR that had come. We said that income proof देने की जरूरत नहीं है अभी. ये पहले ऐसा था कि 20,000 की सैलरी होनी चाहिए वगैरह वगैरह. अभी 20,000 सैलरी का लिमिट ही निकाल दिया for the sale of the when the sale has taken place. तो इनकम प्रूफ का क्या जरूरत है? बट ये पेपर मांगा जाता है, पीपल ट्राई टू कंप्लाई. ये सब ऐसे इश्यूज आते हैं जहाँ पे अननेसेसरी देयर इज ग्रेट हरासमेंट टू द. मतलब मैं अगर ये करूँ तो ऐसे करते जाऊँ तो काफी कुछ हो जाता है. मतलब आई कैन टॉक टू यू ऑन मेनी ऑफ दिस इश्यूज. एंड ये पेपर वर्क करते करते सोसाइटीज थक जाते हैं. एंड ये जो फाइनल कन्वर्जन होना चाहिए ये तो होता ही नहीं. अभी फॉर एग्जांपल I think I have covered it in I'll just come to that when I come to PW at one time. Now, ये सब जो है, there are multiple judgments in the High Court, which says that say there is a different statute, that is the law for dealing with cooperative societies. There are different authorities to deal with them. So आप उसका violation का जो होता है उसका अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है. मतलब I'll come to those judgments also so that you can understand why this violation of membership transfer actually is not a violation and that the government should not bother about this. But आप जाएंगे कलेक्टर के ऑफिस में जाएंगे तो ऐसा बड़ा स्टाफ दिखेगा, हर एक everybody is handling 250 societies and it creates what you call pressure on him. अभी it can be solved with it can be solved if and you have to pay all these people and all that. The government also has to pay their salaries and all that. Now the salaries are not small. So unnecessary what you call what the government is spending all money on that and people are also getting affected because of this. I'll come to the, please go to the next slide, please. So I'll come to the Bharadwaj judgment. Now this is a very interesting case. Dr. Bharadwaj, ये अपने चेंबर में ही रहते थे. अभी I don't know. I spoke to him about 10 years back. उसने ऐसा डिस्क्लोज किया कि मेरे पास कोई फ्लैट नहीं है. Because the government asked for a disclosure. कुछ तो फॉर्मेट में I don't have any other flat. तो ऐसा वो डिक्लेरेशन दे दी. And उसको सोसाइटी में फ्लैट वगैरह ग्रांट हो गया. तो किसी को मालूम पड़ा कि इनके पास तो है. So why not make a complaint to the collector? So he made a complaint to the collector. Collector issued a eviction notice. Then he went to the High Court and he said the High Court said that the power to remove a member from a housing society was vested in the general body of a society, and the collector has no power to remove such a person. And if at the time of the grant, the government has to see all those things. But once he is admitted as a member, मतलब उसको निकालने का है. मतलब जब ग्रांट देते समय आपको देखना है ये मेंबर ठीक है नहीं है, तो फिर बाद में आप उसको बोल सकते हैं. But once the land is granted and the society is formed and the house is given to him, the collector has no power to evict him and all that. So he continued and he was a very nice person. वो बोला कैसे मैंने गवर्नमेंट को ये कर दिया. मतलब now these are say people who understands law very well and they take what you call putting the government to lease. Then the next is SP Chennai judgment. Basically, you can go to the next slide, please. SP Chennai is a well-known lawyer. He stays in corporate. I met him once. Now, again, in his case also, the government said कि आपको प्रीमियम भरना है. They did not object to him. They said कि आपने बेचा है तो 80,000 rupees आपको प्रीमियम भरना है. Now he being a high court lawyer, he challenged that. Then Bombay High Court held that a member of a society, although de jure he is not the owner of the flat allotted to him, but in fact he enjoys almost all the rights which an owner enjoys, which includes right to transfer. मतलब उसको वो restrictive clause नहीं है इसमें. He can sell it to anybody and he does not have to
ask anybody like society or जो भी है उसको बेचना है तो बेच दे सकते हैं कभी भी किसी को. And therefore it held that no prior permission is needed and no transfer fee has to be paid. मेरा उसमें mistake है. A written transfer fee has to be paid. It is no transfer fee has to be paid. The Maharashtra government has challenged this order in the Supreme Court. ये करीबन 2009 का जजमेंट था. फिर उसके बाद में ये गवर्नमेंट ठंडा हो गया सब ये मामले में. एंड बट इन द सुप्रीम कोर्ट इट इज नॉट स्टेड. तो उसके बाद में भी काफी ऐसे केसेस थे सेम जो कॉर्पोरेट डेवलपमेंट थे वो सेम बेसिस पे थे. तो दे हैव बीन गिवन रिलीफ ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट. नाउ ये जो ट्रांसफर का और एक चीज है जो मैं यहाँ पे स्लाइड नहीं बनाया है आपको मैं बताऊं कि ये जो लैंड ग्रांट्स हुए थे तभी मोस्ट ऑफ द लैंड ग्रांट्स हैपेंड इन समवेयर इन 70s एंड 80s. और फिर बाद में जब ये मेंबर को ट्रांसफर को जाने का था टू द कलेक्टर ऑफिस नोबडी वाज बॉदरिंग. नोबडी मतलब वो वहाँ के जो स्टाफ थे दे वर नेवर एंटरटेनिंग एनीबॉडी. मतलब वो फॉर्म्स भी नहीं लेते थे कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं लेते थे. In 2001, Mr. Sangeet Rao came as collector suburbs, and he said we have all societies are in violation, and that we are not approved the transfer. The basic purpose of his was to generate revenue. मतलब आप हमारे पास आ जाओ और फिर हम लोग हर ट्रांसफर पे ट्रांसफर फी लेंगे. But when in 76 and all that, when it happened, in many of our societies in our area, we had met the then revenue secretary and told him कि we are going to the collector and they are not transferring the membership. तो हम लोग क्या करना चाहिए? तो उन्होंने बताया आप एक काम करो आप एक लेटर उनको दे दो ट्रांसफर के लिए क्योंकि वो टाइम में सिर्फ लेटर और कुछ सैलरी सर्टिफिकेट या ऐसा कुछ देते थे. And if he doesn't respond in 1 month's time, you sell the flat. You do the transfer and all that. So what has happened is because there was a long period where the government did not bother to check the transfers and all that, or there was no mechanism I would say where members transfers were, or otherwise आपको करना भी था तो बहुत follow up करना पड़ता था. Most societies did not bother and it has created a mess in the sense. Now there are 3 or 4 transfers that have taken place and the government says कि नहीं इसमें सब violation है. And many times it has so happened ये violations में कि original member जो था approved और share certificate में difference है मतलब जो same नहीं है. तो collector said कि आपको original member आपका approved नहीं है तो हम लोग clear ही नहीं करेंगे. So there was a GR of 22 which I should have brought up here, which levies a very heavy penalty and gives the transfer. The transfer heavy मतलब ऐसा है कि if it is a sale flat and the amount is 1 crore or so, the amount for transfer fee can range from 5 lakhs to 10 lakhs. So it's a very heavy tax basically. So it's a new tax and उसका implication हमको अभी आ रहा है. So I think we'll have to agitate for that to be reduced and all that. We'll come to the next slide. Dinanath CHS judgment. Now Dinanath society is basically land grant under PWR 219 scheme where 90% are reserved category. Now इसमें ये problem आया कि they wanted to do redevelopment. और जो नए मेंबर आने वाले थे 40-50 जो भी थे somebody made a application to the collector कि नहीं उधर एक social welfare department करके है गवर्नमेंट उनको रिप्रेजेंटेशन किया कि जो एडिशनल न्यू मेंबर्स आने हैं उसको भी 90% होना चाहिए. Now if that had happened मतलब वैसा कुछ करते थे तो builder would have not been interested because he knows कि everybody's capacity to pay. If you have some restricted clause like that and you are not able to sell your the whole project will get unviable. So he went right through the channel of what you call quasi-judicial and judicial
जो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म जो बोलते हैं, सो फ्रॉम कलेक्टर ही वेंट टू जॉइंट कमिश्नर, देन ही वेंट टू रेवेन्यू मिनिस्टर, देन ही वेंट टू हाई कोर्ट. उसको करते करते 7 साल लगे उसको. एंड देन द बॉम्बे हाई कोर्ट में जजमेंट में ये लिखा कि एट द टाइम ऑफ द ग्रांट, जो भारद्वाज का ये था, वही रेफर किया कि एट द टाइम ऑफ द ग्रांट ओके 90% इज टू बी देयर, बट उसके बाद में एक सोसाइटी बन गई तो उसका जो मेंबर किसी को लेने का है नहीं लेने का, दैट इज द फ्रीडम ऑफ द सोसाइटी. उसको कोई भी मतलब रिस्ट्रिक्शन वो टाइम में नहीं बनता है. And now that the cooperative society is a constitutional body under Article 19(1)(c), it is basically that right cannot, that freedom to decide कि ये कौन है क्या है, that cannot be encroached by the government basically. और दीनानाथ का जो जजमेंट के बाद में काफी जो PWR 219 स्कीम की जो है societies, I remember 2 or 3 societies have taken advantage of the judgment, and redevelopment का जो गवर्नमेंट का ये था सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का, उसका फायदा, मतलब ये जो जजमेंट का फायदा लेके दे हैव बीन एबल टू गेट द गवर्नमेंट ऑफ इट्स बैक. कैन वी गो टू द नेक्स्ट जजमेंट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. व्हाई नाइक नगर ट्रेजेडी? So Naik Nagar was granted land under PWR 219 scheme. In PWR 219 scheme, there are two multiple controls. One is basically the collector, and another is basically the social welfare department. So you can understand the difficulty in getting the membership transfers and all that. Of course, it has to get the permission for membership approval from the social welfare department. But if it was to do the redevelopment, it has to go to the collector, because the land is owned by the collector. Land is rented by the collector, not owned by the collector, rented by the collector. Collector puts a different सुनील जी आवाज नहीं आ रहा आपका? यस. hello, can you hear me? अभी आ रहा. गो अहेड सर प्लीज. नाइक नगर. यस सर. सुनील जी आवाज नहीं आ रहा आपका? Hello, can you hear me? यस गो अहेड Hello, सर. can you hear आवाज me? आ रहा है. यस Sunil ji, can you hear me? सर आवाज आ रही है आपकी. गो अहेड सर, आवाज आ रही है. Can you hear me? यस सर. गो अहेड. सनील जी आपका आवाज आ रहा है. गो अहेड सर. हेलो. यस सर. Hello. Yes, Okay, yes, you can hear me. sir. So why Naik Nagar tragedy? Yes. So Naik Nagar was granted land in the PWR. It was in really dilapidated condition. Matlab, it is very near to my place. It is part of Shiv Srishti. And when I saw the building, I was really surprised with the condition that it was having. मतलब कभी भी गिर सकता है ऐसा kind of building था. And I don't know how it उसको municipality allowed it to not why municipality did not vacate this building. There were 4 to 5 buildings and there were a lot of internal rivalry disputes. उसके लिए वो लोग जो redevelopment करना चाहते थे and they tried for almost 20 years
and but they could not do that basically. मतलब काफी कोशिश उन्होंने की थी. The land was granted in 1966. Now these lands in 1966 were constructed in 70s, and so the quality of cement, which was basically ration cement, was very low. And lastly, it was not maintained properly. So that is the reason why this tragedy has taken place. Can we go to the next slide, please? Redevelopment problems. Now, redevelopment in particularly the government granted lands are a big problem. There are very few redevelopments that have happened in the government granted lands. और मेरे को ये डर है because when I see around and when I see there are certain buildings which have not been maintained properly, and then there is a possibility that more tragedies will happen, because we have to have let a avenue of redevelopment happen in these places. अगर वो ऐसा ही रखा, you can see that MahaSeWA, BMC or any private land for going for redevelopment is not very difficult. I think BMC there are a lot of problems, but MahaSeWA में अच्छा जा सकते हैं, SRA में भी जा सकते हैं, but getting collector land to redevelop is a big problem. और हमारा जो संघर्ष है अभी ये फ्रीहोल्ड वगैरह जो है 2-3 साल का हो जाएगा, और हमारा कुछ और भी जो हमारे और 1-2-3 है जो अगर हो जाते हैं, which the new government brings, then we can think about doing it very fast. So there is a great bank of buildings built in 70s, particularly 70s में काफी अपना चेंबूर ये वो मतलब सांता क्रूज जहाँ पे they have been built, and they have been built with inferior quality ration cement. मतलब वो टाइम का जो रेशन का सीमेंट था उससे वो बांधा है बेसिकली. और ये सब freehold land can go easily for redevelopment, but for government granted lands it's like a prison. आपको वो prison में बैठे हैं, and you want the freedom to do redevelopment and you can't do it basically. And there is a kind of a apathy between the bureaucracy and political class. तो कुछ मतलब हम लोग representation करते हैं, and ऐसा slow motion, एकदम slow motion में things are happening. For anything, sometimes there is negative news and there is a apathy. Sometimes वो सब बहुत ऐसा मुश्किल से हमको जाना पड़ता है ये सब काम करने के लिए. So let us go to the next slide. Yeah, reforms. So what we have been trying is basically based on, say, there is a certain reforms that are required, and these reforms are well documented. मतलब मैं ये जो चीजें जो बोल रहा हूँ या कर रहा हूँ, and whatever our federation is doing, that is based on what the government has itself recommended for itself. मतलब there are various administrative reforms that are reports that are there pending, and यस्ता करके government की संस्था है थोड़ा, and it compiled reports in 2006, and then it came out with certain conclusions, particularly say for revenue department it said कि, and for the land tenures, that there is a unification of tenures. मतलब unification मतलब आप सबको एक freehold में करिए. अभी यहाँ पे पोर्तुगीज टेन्योर्स है, ये है, सब आपको इतना अलग अलग टेन्योर्स रखने की जरूरत नहीं. Make it so that, and आप थोड़ा सा चार्ज लगाए और खत्म करिए, because then that university आज जैसे हम बोल रहे थे ना कि GST होना चाहिए, सबको कॉमन ये होना चाहिए, because then it becomes easier to do transaction. But वो तो अलग बात है, that maybe chartered accountants can say. But here also in Maharashtra, all lands should be freehold lands basically. मतलब उसमें माडा लैंड्स होना नहीं चाहिए, सबको फ्रीहोल्ड होना चाहिए. माडा लैंड्स का तो स्टोरी अलग ही है, but the land is with माडा and the building is with the society. ऐसा कुछ मतलब उल्टा सुल्टा है, तो ऐसा सब होना नहीं चाहिए. Let the lands be with the citizens and they let them decide what is to be done. That restrictions causes lot of problems for the societies to redevelop. एक तो society में to bring unanimity and to
to come to a conclusion is difficult. उसमें से ये सब उसमें जाने के लिए nobody is willing to do the work. And then it said that report कि ये सब unification करना है, so you do it at 1 rupee per square foot and convert it into class 1. That was the recommendation in 2006. ये 1 रुपया में ले लो और खत्म कर दो, and it will make life of people very simple. मतलब the title will be marketable. You can mortgage the lands and with the financial institutions, and you can do proper redevelopment and all that. So these are the reforms that have been suggested. I would like to add this. In 2016, Ratnakar Gaikwad was the director, and the chief consultant was Mr. Nitin Karir. Today is the additional chief revenue secretary. Now this is what I can say. But when you sit on the chair, then the pressures on the chair are different. Basically. When you talk about reformer as an academic, it's different, but the pressures of the chair are different. And so that is the issue. Can we go to the next slide? We want very simple and effective solutions. कोई ज़्यादा ये नहीं है. It can be, all this problem can be solved with very simple solutions. आप 5% में freehold कर दो for cooperative housing societies and residential, and आप नाजुल lease lands को 5% में convert कर रहे हो, तो why not cooperative housing societies? There is no difference in the type of land. दोनों तो land same ही है. तो why नाजुल लैंड का एक हिस्ट्री है कि 1857 में जब अपराइजिंग हुआ था, तो जिसने अपराइजिंग जो भी सोल्जर्स वगैरह थे, सबके उनके जो लैंड्स थे दैट वाज एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट. वो जो नाजुल मतलब एक एज ए पनिशमेंट इट हैज बीन टेकन. एस्चीटेड मतलब जो बोलते हैं नाजुल का मतलब एस्चीटेड एज पर द it is the meaning. So land was deliberately acquired. वो उसका नाम पड़ गया नाजुल लैंड, जबरदस्ती एक्वायर किया, बट वो लैंड वापस गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूट किया. तो ऐसा कुछ अलग नहीं है वो लैंड. They were given either on lease basis or on occupancy basis. There are two types of nazul lands that are there in the Maharashtra state, and both have come from the creation of Maharashtra state. Like for example, when Maharashtra state was created, there was a portion with the central provinces like Nagpur, Vidarbha and so on, Chandrapur. तो वो जो लैंड था वहाँ पे जो नाजुल लैंड था, they were leases and सलील जी फिर आवाज आपका लो हो गया. सलील जी प्लीज MP Maharashtra ऑडियो गेन करें, आवाज बहुत स्लो है आपका, बहुत स्लो है. And then there was another सलील जी increase your audio, which is part of the आवाज नहीं आ रहा which आपका. came from the what you call Berar area. मतलब वो जो हैदराबाद निजाम के पास था बेरा, और उसका एक लॉ था बेरा कोड. Those nazul lands were occupancy lands. तो आप समझ लीजिए occupancy and leases, these are basically occupancy and lease lands. तो ऐसा कुछ फर्क है ही नहीं. मतलब उनका लीज ऑक्यूपेंसी है, हमारा भी ऑक्यूपेंसी लीज है. तो फिर ये डिफरेंशिएशन गवर्नमेंट शुड चार्ज सेपरेट रेट्स फॉर देम. एंड उनके को देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. कितना भी साल के लिए कभी भी वो लोग कन्वर्ट इट इनटू 5%. Now the second thing is that what we are asking is give exemptions to the violation. ये सब मेंबरशिप ट्रांसफर वगैरह सब आप निकाल दीजिए. चाहे तो एक स्मॉल प्रीमियम 1% नॉट एक्सीडिंग 1% लगा के पूरा उसको एग्जम्पशन दे दीजिए, खत्म कर दो. बेसिकली ये पेपर वर्क में आपका बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेसी जाता है, टाइम पास, लोगों का टाइम पास होता है. आप 1% एक एफिडेविट ले लो saying that I want to convert at and I am willing to pay a premium for the membership violation. सलील जी आपका ऑडियो नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा. 5% and maximum 1% खत्म कर दो. And there should be no time limit. Why you should have different what you call rules for different lands? Then there are two different types of land also that has to come under this. I will say that
deemed housing societies as per MoFIL, that is lands which have been given to individuals are now have become housing societies. And under सलील जी आपका आवाज नहीं आ रहा, because ये जो Gazette notification है, the government is saying साउंड क्लियर नहीं आ रहा आपका. there is no provision for you. You can't convert because it has to be mentioned. So ये जो है, these lands should be converted. The government can mention them in the Gazette notification. सलील जी आवाज नहीं आ रहा आपका. हेलो Let them convert it into freehold. हेलो, आवाज नहीं आ रहा आपका. Next slide. Thank you, sir. If you have any questions or something, I can answer. Or Mr. Sunil, you can take over. सर लास्ट में आवाज नहीं आ रहा था आपका. हेलो, Mr. Sunil, can you take over? ऑडियो डिस्कनेक्ट हुआ शायद आपका लास्ट में, एंड में. Mr. Sunil, can you take over? Ramesh ji. Yes, thank you very much. I can't hear you. मेरा आवाज आ रहा, मेरा Can't hear you. मेरा आवाज आ रहा, आवाज आ रहा मेरा. I don't think I can hear you. श्री प्रसाद परब जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. श्री प्रसाद परब साहब, मेरा आवाज आ रहा, आप मुझे रिएक्ट करें यदि आवाज आ रहा तो. आवाज इज क्लियर माय पार्टिसिपेंट्स में से. यस, योर ऑडियो. श्री प्रसाद, थैंक यू वेरी मच. सलील जी आपका धन्यवाद. आपने काफी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया. सेड अबाउट कुछ सवाल आ रहे हैं, उससे पहले मैं इनवाइट करूंगा हमारे हाउसिंग फेडरेशन, महाराष्ट्र हाउसिंग फेडरेशन के डायरेक्टर संचालक एडवोकेट श्री प्रसाद परब साहब को. परब साहब और DS वडेर साहब भी जुड़े हैं हमारे साथ में, मुंबई हाउसिंग फेडरेशन के DS वडेर साहब भी. तो मैं अभी इनवाइट कर रहा हूं मैं श्री प्रसाद परब साहब को. प्लीज वेलकम परब साहब. अविनाश, परब साहब को इनवाइट करो ऑडियो ऑन करके. परब साहब, Can you hear me? यस. सलील जी, Hello. आपका आवाज नहीं आ रहा सर. आपका आवाज नहीं आ रहा. आवाज चेक करें आप, ऑडियो चेक करें आप. माइक प्रॉपर लगा एयरफोन प्लीज. Sir, we can hear both of you. Oh, okay. Tell me. I'll take it near. Can you hear me now? आवाज पर आ रहा है ना? यस सुनील जी. हाँ बोलिए. अभी सजेशन ऑब्जेक्शन कभी तक देना है? 3 अगस्त. से नाउ ये सब बात थोड़ा बताना था. से आफ्टर आवर परसुएशन, आफ्टर द नाइट नगर ट्रेजेडी, वी वेंट टू द रेवेन्यू मिनिस्टर विद अ लेटर सेइंग कि देखो ये क्या हो रहा है. और नेक्स्ट डे कैबिनेट में उन्होंने अप्रूव कर दिया. एंड 4 अगस्त तक उन लोग को सजेशन ऑब्जेक्शन देने का है. नाउ जो नोटिफिकेशन है उसमें तो सिर्फ इतना ही लिखा है कि 2 साल के लिए बढ़ाने का है. बट हम लोग बोलते हैं कि सिंस इट इज गोइंग टू द कैबिनेट, लेट अस आस्क फॉर मोर. व्हाई नॉट आस्क फॉर 5%? व्हाई नॉट आस्क फॉर मेंबरशिप ट्रांसफर? उसको पूछना ना. तो मैंने वो जो है, हेलो, या तो मैंने वो सब जो है वो एक फॉर्मेट बनाया है इंग्लिश हिंदी में. तो जो भी चाहते हैं मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ. यू कैन सर्कुलेट इट and before 4th of August you submit it to the government basically. Okay. We have met. I personally feel that the present government which talks about common man will try to solve our problems in past. मतलब हमारे जो MLA थे, he has already referred in a public program
when the chief minister was there, and he said कि ये collector land का issue खत्म होना चाहिए. So he said कि 1 month or 2 months में मैं ये सब issues खत्म कर देता हूँ basically. So it is better that we now talk to the government as much as possible through various MLAs, MPs, and try to speak to them and try to, get what we desire, 5% and all that basically. Okay. Yeah. So, can we have a common representation? I suggest don't have a common representation. As many people as possible, individual societies, associations, everybody should write. Yeah, that is correct. The numbers also make a difference, basically. So don't try to say कि मेरा एक association है, मेरा एक letter association का गया, तो ऐसा नहीं होता है. The bureaucrat may not understand what your association is all about. He basically looks at the number of letters and all that. What is the overall response to the scheme? प्रेशर आता है ना, इतना हाई डिमांड है. Yeah. लिखना पड़ता है. एवढे लोकांचे एवढ्या सोसायटी 5000 सोसायटी आहेत ना कलेक्टर लाइन. सिग्नेचर कैंपेन की आपको सजेशन ऑब्जेक्शन ही देने को बोला है, तो don't do any signature campaign. It doesn't go anywhere. This will go directly to the bureaucrats. ड्राफ्ट हो देगा. Secondly, I suggest that you meet your local MLA and MP. आपका local MLA है, particularly. Can you hear me? Yes. You go ahead. जो लोकल MLA particularly जो शिवसेना शिंदे ग्रुप का है, उसको अगर MLA को मिलेंगे तो it will also be very effective. मतलब no doubt other places also they can do, but you try and give a letter to him और उसको suggestion objection को letter भेजने को बोलो. So I already told one MP and one MLA. आपका लोकल MLA को मिलके उसको बोलो कि ये लेटर आप दे दो. मैंने तो ड्राफ्ट सर्कुलेट किया हुआ है और किसी को चाहिए तो मैं दे देता हूँ, और मराठी में है, इंग्लिश में है, तो लेट देम आल्सो गिव द लेटर. सो इट एक्वायर्स लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस. ये जब गवर्नमेंट में जाता है एंड सो मेनी MLAs आर आल्सो राइटिंग लेटर्स, तो फिर वो फर्क पड़ता है बेसिकली. Any other questions, suggestions? क्या बोला? आपको say I'll forward it to, or you can send me a hi to my mobile number on my WhatsApp. जो जिसको चाहिए मैं ड्राफ्ट भेज देता हूँ. I'll send it to Mr. रमेश प्रभु also. आप either रमेश प्रभु को भेजिए या सलील जी मुझे भेज दीजिए. मेरे जो ग्रुप्स हैं उसमें मैं तमाम जो आपका जो ड्राफ्ट है वो भेज दूंगा. मैं अपना नंबर शो कर रहा हूँ चैट बॉक्स में, और आपको नंबर भी बता रहा हूँ आप सभी को. मेरा नंबर है 9920378133 9920378133. चैट बॉक्स में भी शेयर कर रहा हूँ. यूट्यूब पे भी काफी सारे सैकड़ों लोग देख रहे हैं, उन लोगों को भी सवाल है इस विषय से लेकर, तो मुझे मैसेज करें और मैं आपको चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ नंबर, तो आप ये नंबर नोट करें और आप मुझे मैसेज करें. जो ड्राफ्ट सलील जी पहुंचाने वाले हैं उसको आपको मैं शेयर करूंगा. 9920378133. से इट इज ए वेरी सिंपल ड्राफ्ट. आप लेटर हेड में सीधा का सीधा कॉपी करिए. आप इंडिविजुअल हो तो डायरेक्ट उसको प्रिंट आउट लेके साइन करके उसको स्पीड पोस्ट में या सलील जी मैंने शेयर कर दिया मेरा नंबर. तो आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि जो आपको अच्छा पीपीटी शेयर कर सकते हैं क्या, आपकी इजाजत हो तो सलील जी, आपकी जो पीपीटी है. हाँ बिल्कुल. आपको ये पीपीटी चाहिए समझने के लिए ज्यादा, और जैसा कि सलील जी कह रहे हैं कि आप अपने जो स्थानीय आमदार है, विधायक है, MLA,
उनसे रिप्रेजेंट करवाइए, उनसे प्रेशर पड़ता है क्योंकि ही इज द रिप्रेजेंटेटिव। वो इम्पैक्ट ज्यादा होता है विधानसभा में। जो जीआर निकलते हैं, गवर्नमेंट के नए डिसीजन आते हैं पब्लिक के लिए, उससे ज्यादा और इम्पैक्ट होगा। पब्लिक को तो बोलना ही है। तो आप मेरा नंबर नोट कर लें। आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा, एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस और महासेवा ज्वाइंटली मिलकर, और दूसरे जो हमारे फेडरेशन, हाउसिंग फेडरेशन, वो भी इस पर प्रेशर बनाएंगे ताकि ये जो इश्यूज है फ्री होल्ड का, कलेक्टर लैंड का, काफी लोग, लाखों की तादाद में फैमिलीज रहती है हाउसिंग सोसाइटी। और मैं आप सभी लोगों को ये भी चाहूंगा कि सलील जी, हेलो, यस सर, एक आपसे ये भी करें, यस, एक अवेयर ये भी करें कि जब लोग आज भी बड़े कॉम्प्लेक्स में, बड़े लग्जरीज कॉम्प्लेक्स में फ्लैट लेने जाते हैं, तो वो जो ऑक्यूपेंसी क्लास होता है, 1 है, 2 है, क्या है, वो देखते नहीं है। तो वो जरूर देखें, क्योंकि डेवलपर की जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो आपको वर्बली बोलेंगे फ्री होल्ड है, देन फिर बाद में आपका एग्रीमेंट में क्लास सेकंड, ऑक्यूपेंसी क्लास सेकंड 1 लिखा रहेगा, तो आप कहीं ना कहीं वो होगा। तो ये अवेयर हो, एजुकेट हो। और ये जो कलेक्टर लैंड पर जो हाउसिंग सोसाइटी है, जैसे फ्री होल्ड हो, रीडेवलपमेंट का जो काम है, उनका घर का, उनका आशियाना का, वो एक सुरक्षित हो और एक आगे बढ़े। ये हमारा महासेवा का, मुंबई हाउसिंग फेडरेशन का, साथ ही मीडिया न्यूज सर्विस का दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त, और मैं एक बार आपका नंबर जरा शेयर करेंगे उनको सबको, मतलब मैंने शेयर कर दिया, सबको नंबर शेयर कर दिया, यूट्यूब पे बोल भी दिया, चैट बॉक्स में शेयर भी कर दिया। आपका नंबर शेयर करो, अगर किसी को चाहिए तो दे दो, मतलब कोई बोलता है आपको किसी का नंबर व्हाट्सएप चाहिए में तो बोलते मुझे हैं आप मुझे बताइए, मैं आपको नंबर भी मुझे व्हाट्सएप करें तो मैं आपको उनका नंबर भी देता हूँ। ठीक है, थैंक यू सलील जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आए, और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसलिए सफर जारी है। आप इस विषय को लेकर काफी लंबा सफर तय किया है, और मुझे लगता है कि आसार कैबिनेट की नई सरकार आई है, शिंदे सरकार और देवेंद्र फडणवीस की सरकार, हो सकता है इस पे कुछ अच्छे दिन आए, ऐसे जो लाखों लोग कलेक्टर लैंड पर जो हाउसिंग सोसाइटी है उन लोगों के, तो ऐसी फैमिलीज है जो एकदम जर्जर इमारतें हैं, और उन लोगों को राहत मिलेगी काफी। और रीडेवलपमेंट का जो काम है उन लोगों का आशियाने का घर का, वो भी एक सुरक्षित है। आपने इस पर एक मेहनत की, उसके लिए सलील जी धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, सैल्यूट आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सभी का पार्टिसिपेट का धन्यवाद। मेरा नंबर नोट कर लीजिए और आप मुझसे कांटेक्ट रहिए। ऐसे जो हम ऐसे आए दिन विषय उठाते रहते हैं और अवेयर करते हैं, एजुकेट करते हैं, महासेवा और एमएनएस मीडिया न्यूज के साथ में दोस्तों। सलील जी धन्यवाद फिर से एक बार महासेवा की तरफ से, एमएनएस मीडिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल, थैंक यू सर, थैंक यू। अविनाश सिंधे।